Mutual funds, this is a diagram of mutual funds. See, the benefit of mutual fund is you don't have to use fundamental tools, technical analysis tools. Directly, you are handing over your funds to experts. Experts will manage your funds. They will invest in the tax saving fund. If you want to invest in tax saving mutual fund, there are many options in tax saving. So whether your money get locked up in some mutual funds, the fund manager says it is a close-ended mutual fund. So your money will be locked for 3 years or 5 years. So these are the instructions given by mutual fund that this is a close-ended fund. Your amount will be fixed, locked. I meant to say your amount invested is locked in the close-ended mutual fund, and you can withdraw after that particular tenure is completed. And there is a flexibility. You can sell your mutual fund on stock exchange and you can withdraw your money. So mutual fund is good for those people who are working currently and they don't have time for analyzing the securities. They take a help of experts, and fund manager is an expert in this industry. He knows which securities and bonds, short-term debt instruments or shares should be bought. On those shares, the dividend is received by the mutual fund and they distribute this dividend. If you have selected dividend option, you will get dividend. And if you have selected growth option, you will not get dividend. That doesn't mean that you are getting something less. You can get wealth benefit, compounding of investment. Your money will grow in value over time. Okay, so mutual fund is safe investment if you understand them. If you are not able to understand what type of security it is, then don't select that particular mutual fund. First, you have to study the goal of mutual fund. It should suit to your goal. Personal goal क्या है हमारा investment का और mutual fund का investment goal क्या है. So people who don't read the offer document and they don't understand what is the expense ratio, what is the expenses of mutual fund, and they say that mutual fund is bad investment because they don't know about the expense ratio. They don't know about the close-ended fund. They want to withdraw funds anytime. Those people who want to withdraw anytime from the mutual fund, they should not select lock-in period. They should not select close-ended schemes. Okay. So NAV is calculated every day other than Friday. So if you have placed order to buy a liquid fund, it will be allotted to you on Saturday or Sunday. Sunday's NAV. Okay, so safest way to invest money in the 2021, if you can see in the COVID-19 time from 2020 to 2021, all the mutual fund NAVs has increased because people are rolling money into mutual funds and into different stocks. So the mutual fund NAV is increasing because people are investing money. They are demanding different mutual funds. So the value of asset value of mutual fund is increasing. So if you don't have time to analyze different stocks, you can give money to experts. You can pool money and hand over to experts. They will invest in selected securities, in blue chip funds or in small cap funds. If it is a small cap fund, it will be named as a small cap fund. If it is a middle cap companies, if you are investing into middle cap companies, so that
will be middle cap. large cap Large cap are blue chip funds. These are excellent companies. They have good performance from last many years, and blue chip stocks are large cap fund. Whether you can save tax on mutual funds? Yes, you can save tax on mutual fund by investing 1,50,000 in the tax saving mutual funds, and you can invest lump sum or SIP in a particular year from 1st March to 1st April to 31st March. You can invest in SIP of different mutual fund, and 1,50,000, up to 1,50,000 you have invested, that you will get deduction in the taxable income. And these securities will generate returns, dividend. You will receive dividend on some shares, and you will get bonus shares on some shares. So mutual fund will receive this dividend. Custodian and the registrar will come to know that we have received the dividend from shares which we are holding in the demat. So mutual fund will receive dividend, and it will allot dividend only if you have selected dividend option. If you have selected growth option, that NAV will grow by that amount. The dividend amount which is added in the capital amount will grow the NAV of mutual fund. So in this mutual fund, we don't call it as a share, because we invest in shares also, we invest in bonds also, we invest in liquid funds like money market instruments. So this particular share of mutual fund is called as a unit. Mutual fund is called as a unit. These are the advantages. Professional management. Experts are handling your mutual fund. Okay, and it is an advanced portfolio management. Dividend is reinvested. If you are not selecting dividend option, then amount of dividend will be reinvested in your capital amount. And your risk is reduced because it is handled by potential professional people. Okay, and it is very safe. एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस जो है वो बहुत कम होती है. बहुत सारे लोग होते हैं तो डिवाइड हो जाता है कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस. कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस इज डिवाइडेड अमंग पीपल. इट इज इजी टू एक्सेस एंड ट्रैक. आप इजीली ट्रैक कर सकते हो इसको म्यूचुअल फंड को, क्योंकि इसका डेली एनएवी कैलकुलेट होता है. And it is having a tax benefit. If you select tax saving mutual funds, you will get a tax benefit. Diversification means when you invest in one mutual fund, immediately you own different stocks, different bonds. And diversification means you are dividing your money into different shares and bonds. It is for investor protection. Investor want high returns, and he want unlimited returns from the mutual fund. So these experts will invest money on your behalf, and these experts will generate returns, generate high returns. Sometimes you will lose money also. So when the market is falling, that time whatever amount you have invested, that value will go down. The value will go down, and the dividend payments may also change. Maybe you will not get dividend also in some years. Okay, so what is the income from the mutual fund? It is very transparent system. Income is earned in the form of dividend.
Income is earned in the form of interest on bonds which you held in the fund, and many people they select SIP. SIP is systematic investment plan. Standing instructions are given to bank. In your saving account, you give standing instructions to bank that the amount should be deducted from every month. The amount will be debited from the saving account and it will be credited to mutual fund, and new units will be purchased every month. Okay, so this is for earning returns, high returns. You invest in a mutual fund. So the purpose of investment is always getting a good return from the mutual fund. Now, what are the disadvantages? If you get a loss, that is a disadvantage. Loss in mutual funds. Loss in mutual fund means NAV of mutual fund has decreased after you purchase. So because of mismanagement of funds. If fund manager is a bad manager, he is not looking after the funds of investors. Okay, so when market is going up and down, you will get profit and loss in mutual funds because of changes in the prices of different stocks. When the value of share price will decrease, it will decrease the value of NAV. When you will put a lot of money into stocks, if fund manager is putting lot of money into stocks, and when the share price is falling, you will get a loss in the mutual funds. So mutual fund value will go up and down. Down value is bad for us. So mutual funds, they have no guarantee of returns. They will not give you guarantee that we will pay you the principal amount back to you. They will not say that there is a guarantee of returns. So ensure that you are investing for minimum 5 years to get superior returns. And people invest for 10 years at least to get superior returns. So people are worried about their investment amount when they are getting negative returns from mutual fund. Okay, so keep investing in SIP. So when market is down, you get many stocks, many units of the same mutual fund. When market is going down, that time you can invest larger amount of investments. Okay, and fund managers will put lot of money into the stocks. You can choose those mutual funds which are having debt proportion also, debt asset allocation also. Okay, and there are misleading advertisements made by mutual funds. So that is also a big problem. Fluctuating returns of mutual fund are not fixed. They are flexible returns. Volatile characteristics. Because the share price is increasing, going up and down. Because of that, NAV will also go up and down. This is the structure of a mutual fund. How mutual fund is managed. There is a sponsor involved in mutual fund. Sponsor invest into the mutual fund at least 40% into mutual fund. So in any mutual fund, you will find 40% investment of at least 40% investment of sponsor contributing into the mutual fund. They appoint trustee as per the Trust Act,
and the role of trustee is to take care of mutual fund. Okay, so this mutual fund, they will appoint a trustee, and trustee is the caretaker. Trustee is the caretaker of the mutual fund. They hold the property for the benefit of unit holders. Trust is established by sponsor. Sponsor will establish the trust, and they will take care of the mutual fund structure. They will take care of the asset allocation, that if in the asset allocation in the offer document we have written 70% in debt instruments and 30% in equity instrument. So trustee will take care that this asset allocation is maintained till last. Okay. So when they launch any scheme, they write in the offer document that what is the asset allocation, 70% in debt and 30% in equity. So the trustee or the board of the trustees, they should check whether asset allocation is maintained till last. Okay. Next is AMC, asset management companies. They manage the funds, they invest money which is collected, making investment in various types of securities. Okay. And then fund manager, AMC के अंदर fund manager analyze करेगा stocks को, and he will hold the securities with the custodian. He will keep the securities with the custodian. The role of registrar and transfer agent. The role of custodian is to hold the securities in custody, and role of registrar and transfer agent is scams. They will give consolidated statements to consolidated statement means कौन से transactions हुए हैं, purchase, sale, switch हुआ है किसी का, किसी ने एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच किया है, या जो भी परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन हुई है उसकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट उसके ईमेल पे भेजता है और उसके कोरियर करके उसके एड्रेस पे भी भेजता है. तो मेरे पास हमेशा कोरियर से आता है और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ईमेल में भी आता है. कैश बोलते हैं जिसको, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट. So registrar is CAMS, CAMS, consolidated account statement भेजते हैं वो लोग, और जिसमें पूरे जितने भी म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं, आदित्य बिरला है मेरे पास, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, आई हैव DSP ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड एंड L&T एमर्जिंग फंड. उसका क्रेडिट भी हो गया, लॉक इन पीरियड खत्म हुआ और उसके बाद उसका अमाउंट क्रेडिट भी हो गया, 3 years कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर वो सेल हो गया ऑटोमेटिक. क्लोज एंडेड फंड था. सो यू कैन जनरेट कैश थ्रू द फंड हाउस. अब जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर आप परमानेंट अकाउंट नंबर लिख के अपनी ईमेल एड्रेस लिख सकते हो, और कैम्स और कार्वी ये दोनों रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स हैं. ये आपका अकाउंट जो ईमेल आईडी है और जो आपका पैन अकाउंट नंबर है, उससे जो भी आपने परचेजिंग किया है, हर एक म्यूचुअल फंड में आपका पैन तो कॉमन है, पैन कार्ड नंबर कॉमन है. तो RTA क्या करता है, ईमेल के थ्रू आपको पहले बोलता है कि पैन के थ्रू लॉगिन करो, पैन आपका लॉगिन आईडी होगा, और उसके बाद इसमें आप अपना पासवर्ड बना के और ईमेल पे अपनी कैम्स की जो है कैश को सेंड कर सकते हो. तो कैश से आपको क्या पता चलेगा, कैश से ये पता चलेगा कि मेरे म्यूचुअल फंड्स मैंने अगर 3 years तक होल्डिंग पीरियड किया है
3 इयर्स तक मैंने म्यूचुअल फंड को होल्ड किया है, तो मुझे उसमें कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, मैंने क्या रेट पे परचेज किया था और कौन सा रेट अभी चल रहा है, ठीक है। सो द यूनिट्स purchased at what price, that will be written in the left side, and on the right side they will write the current price of mutual fund, current NAV as on that particular date, जिस दिन consolidated बेचा है उसके मंथ एंडिंग पे हर महीने में consolidated स्टेटमेंट निकाली जाती है। तो NAV का डेट और NAV वैल्यू, और जितने भी यूनिट्स है वो भी आपका यहाँ पे लिख के आएगा, जितने यूनिट्स आपने बाय किए। So at one place you will get all the details of sale, purchase and details of NAV as on a NAV particular date, कौन से डेट पे क्या NAV है और आपका एक्सपेंस रेशो कितना है, वो परसेंटेज में आपको रेगुलर स्कीम या डायरेक्ट स्कीम में पता चलेगा। तो ये जो कैश की स्टेटमेंट है ये आप जनरेट कर सकते हो कैम्स के वेबसाइट से, और खुद को ईमेल भी करवा सकते हो पैन कार्ड नंबर डाल के, और अपने ईमेल पे सेंड करवा सकते हो, और उसके थ्रू आप अपने टैक्स रिटर्न फाइलिंग, जब आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है किसी ईयर में, तो उस प्रॉफिट में अगर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हुआ है तो 10% उस पर टैक्स पे करनी पड़ेगी, कैपिटल गेन टैक्स। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, आपको 1 साल में आपने उसको सेल कर दिया है, तो उस प्रॉफिट पे आपको 15% का टैक्स भरना पड़ता है। तो जब आप टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते हो तो आपको ये कैश निकालना ही पड़ता है, 31 मार्च तक का डेट डाल के उसका कैश निकाल के आपको वो सारे रिकॉर्ड्स टैक्स लायबिलिटी के लिए या टैक्स इन्वेस्टमेंट प्रूफ के लिए, TDS डिडक्शन के लिए आपको देने पड़ते हैं। जितने भी आपने सेल किए हैं उस पर प्रॉफिट हुआ है अगर, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स भी भरनी पड़ती है। और डिविडेंड अगर 1 लाख से कम है तो उस पर आपको टैक्स नहीं भरनी है, 1 लाख से ज्यादा डिविडेंड अगर मिला है तो आपको उसके ऊपर टैक्स भरनी पड़ती है। What is fund of fund scheme? फंड ऑफ फंड स्कीम क्या होता है? They invest into different mutual funds. Answer is mutual fund scheme. फंड ऑफ फंड्स का मतलब है दूसरी स्कीम्स में डालना, इन्वेस्टिंग इन अदर म्यूचुअल फंड स्कीम्स। A dash fund maintains a portfolio that is in line with the passive fund. Answer is index fund. जब आप लोग इंडेक्स फंड को सिलेक्ट करते हो तो जितने 30 स्टॉक्स BSE के अंदर 30 स्टॉक्स है, NSE के अंदर जिसका इंडेक्स बनता है वो है 50 स्टॉक्स, तो 50 स्टॉक्स में डायरेक्टली आपका फंड्स इन्वेस्ट हो जाता है, उसका मतलब ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या इंडेक्स फंड। So no need to track any investment or any security, just simply invest into the ETF. Okay. अगर सेंसेक्स के इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो 30 स्टॉक्स में ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सेंसेक्स इंडेक्स फंड HDFC का आता है, HDFC सेंसेक्स प्लान, HDFC इंडेक्स फंड।
ICICI म्यूचुअल फंड, ICICI निफ्टी इंडेक्स फंड। निफ्टी के इंडेक्स फंड के लिए ICICI जो है आपको 5 इयर्स में रिटर्न्स अराउंड 15 to 20% मिलेंगे। अगर 5 इयर्स में इंडेक्स, if index is going up in 5 years, you will get same returns in the mutual fund of index fund। जितना वैल्यू इंडेक्स का बढ़ेगा 5 साल में, उतना ही आपको इंडेक्स के फंड के अंदर रिटर्न्स मिलेंगे। तो यू विल गेट सिमिलर रिटर्न्स। If index like Sensex is increasing by 12% in 5 years, then you will get 12% in the index fund। अगर निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यूटीआई का निफ्टी फंड है और आईसीआईसीआई का निफ्टी फंड है। निफ्टी will go up by 20% up, then you will also get 20% return in 5 years, and there is no lock-in period. You can invest anytime, you can withdraw anytime. This is an open-ended fund. Duration of PPF deposit is for 15 years. The first mutual fund was started in 1964. UTI जो था वो गवर्नमेंट उसको हैंडल करती थी पहले स्टार्टिंग में UTI म्यूचुअल फंड को। और फर्स्ट स्कीम UTI स्कीम 1964 था, यूएस यूनिट स्कीम 1964। PPF इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें मैंने इन्वेस्ट किया है PPF में। अब किसी भी बैंक में जाके पूछ सकते हो कि PPF का मुझे अकाउंट खोलना है। इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है ना, उस पर टैक्स नहीं लगती है। आप अगर PPF में इन्वेस्ट करते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये कहाँ से मिलेगा आपको? किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक के पास ये मिल जाएगा। और इस पे जो इंटरेस्ट होता है ना, उसको टैक्स पे उसमें से टैक्स डिडक्ट नहीं होती है। जैसे SBI में अगर किसी का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, तो वहां पे वो अपना PPF अकाउंट में कुछ अमाउंट रेगुलरली वो लोग मंथली स्कीम के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर उसके अंदर लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, और ये 15 इयर्स तक आपको हर साल इन्वेस्टमेंट करना है, 15 इयर्स तक। तो अभी आप स्टार्ट करोगे तो 15 इयर्स के बाद आपको बहुत सारा अमाउंट इसमें से मिलेगा। 15 इयर्स के बाद एवरी ईयर आपको एनुअली इन्वेस्ट करना है इसमें 15 इयर्स तक। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप एनुअली इन्वेस्ट कर सकते हो 1,50,000 तक। मैक्सिमम अमाउंट 1,50,000 तक आप डाल सकते हो, और इसमें इंटरेस्ट मिलता है 7%। मैंने स्टार्ट किया था तभी 8% था, अभी 7% हो गया है। और पोस्ट ऑफिस में भी ये स्कीम अवेलेबल है। ओके, 7.10 इंटरेस्ट मिल रहा है इसके ऊपर। तो ये गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। जिसको एनुअली इन्वेस्ट करना है टैक्स सेविंग के लिए, वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टैक्स डिडक्शन भी मिलता है, और इसका जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स फ्री होता है। तो किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक के पास आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। PPF अकाउंट यू कैन ओपन इन अ बैंक और पोस्ट ऑफिस। द स्कीम इज सेम। अगर आप पोस्ट ऑफिस में करोगे तो भी सेम फैसिलिटी है, और अगर आप बैंक से कर रहे हो, किसी पब्लिक सेक्टर बैंक से, तो भी ये सेम बेनिफिट देगा आपको। टैक्स बेनिफिट इंटरेस्ट का मिलेगा, इंटरेस्ट पे टैक्स डिडक्ट नहीं होगी, और इंटरेस्ट भी अच्छा है 7%। 7.10 is good, and it is safe also. You can open online also. आजकल ऑनलाइन भी ये किसी भी बैंक के वेबसाइट पे आप देख सकते हो, वहाँ पे PPF भी लिखा होता है, उस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो।
सिक्योरिटीज ऑफ अ फंड आर हेल्ड बाय डैश. जितनी भी सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है वो सारी सिक्योरिटीज संभाल के रखना, डीमैट को संभालना, वो कस्टोडियन का रोल होता है. Custodian will take care of all the demat securities which they have purchased. Okay, taking care of securities. Who promotes mutual fund? लॉन्च करना, प्रमोट करना मतलब लॉन्च करना. इसमें पहला इन्वेस्टमेंट स्पॉन्सर का होता है. लॉन्च करने में सबसे पहला रोल है स्पॉन्सर का. Mutual funds are constituted in India as a dash. Mutual fund is a trust. Okay. ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? जिसपे आप फेथ कर सकते हो, आप रिलाई कर सकते हो. तो म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट which will take money from you and they will invest into different investments. So it is a trust. You can place a faith on this particular mutual fund. Okay. इसलिए इन लोगों के अंदर जो ट्रस्टी अपॉइंट किए जाते हैं वो केयर टेकर होते हैं. जो पैसा ये लोग कलेक्ट करते हैं तो ट्रस्टी को ये सारे पैसे का केयर करना पड़ता है. ही इज अ केयर टेकर ऑफ म्यूचुअल फंड. Dash regulates mutual fund depositories, custodian, registrar and transfer agent in the country. In India, who is the caretaker? SEBI, Securities Exchange Board of India. Now, if you consider safety, जिसको लग रहा है कि मुझे सेफ इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, तो which type of high safety you will get in bonds, high safety you will get in bank deposits, high safety you will get in public provident fund, LIC, gold, mutual funds. Moderate safety you will get in corporate debentures. You have to read the ratings of debentures before investing. Moderate safety in property. Volatile category is equity shares, highly volatile, and property. And moderate fluctuations in the prices of bonds, debentures, gold, and mutual funds. If you want to withdraw money quickly, you have high liquidity in equity shares, low liquidity in case of debentures, bonds, FDs. You cannot withdraw money from fixed deposit. If you withdraw, you will get penalty on that amount which you are withdrawing. Actually, the safety is not high in case of mutual fund. It is medium. I can say medium safety, moderate. Liquidity is high. You can withdraw anytime if it is an open-ended scheme. And volatility is high. It is highly volatile. If it is a equity mutual fund, it is highly volatile. If it is a debt mutual fund, it is moderate. It is having a moderate volatility. It depends upon the scheme. If it is a debt mutual fund, it will have a moderate fluctuations. If it is an equity mutual fund, it will have high
fluctuations. Volatility means fluctuations in the prices of the stocks, bonds, debentures. Okay. Returns, you will get high returns in equity because it is highly volatile, highly changeable. Prices are going up and down frequently. In that case, you will have high returns in equity funds. Returns from the bank deposits are very low. PPF, you are getting moderate returns, 7%. Insurance, you have low returns. Gold, you have moderate returns. Property, moderate returns. If you are selling property after many years, you will get high returns. If you are selling immediately after buying in 10 or 20 years, then you will not get that much returns. Mutual fund, if you are holding it for longer period of time, you will get high returns. If you are keeping for only 2 or 3 years, you will not get high returns in mutual fund. So it depends on the holding period of mutual fund or any asset. And there are international funds also available. PE ratio fund, price to earning ratio fund, it invests in equity and debt instruments wherein the proportion of investment is determined by ongoing earning multiples of the market. 90% of investment is allocated to equity markets if Nifty index PE ratio is 12 or below. If this ratio exceeds to 28, if PE ratio is 28, if it exceeds 28, the investment will be made in the money market instruments. If PE ratio is between 12 and 28, the fund will allocate into debt and equity. Different proportions in debt and different proportions in equity. So this is PE ratio fund. So they check the price of the stock and they also check the earnings of that particular stock, earning per share of that stock. If PE ratio of that particular stock is 12 or below this, it will invest into equity. Price is more and earning is uh, price to earning ratio less than 12, then invest in equity market. PE ratio more than 28, invest into debt and money market instrument. And if it is between 12 and 28 PE ratio, then invest into debt and equity proportions. The first ETF was Nifty Bees.
जैसे हम शेयर्स खरीदते हैं ना, जैसे हम लोग नॉर्मल किसी L&T का या इन्फोसिस का शेयर परचेज करते हैं स्टॉक मार्केट से, तो NSE की वेबसाइट पे आपको निफ्टी 20 दिखेगा, ये आप नॉर्मली परचेज कर सकते हो। जब आप इसको परचेज करोगे, जितने भी 50 स्टॉक्स हैं निफ्टी के, उसका प्रोपोर्शन आपको मिल जाएगा। आपने एक ही शेयर में पैसे डाले, निफ्टी 20 में पैसे डाल दिए, स्टॉक मार्केट में आपने निफ्टी 20 को खरीदा, तो जैसे एक शेयर खरीदते हैं वैसे आपने निफ्टी 20 को खरीदा, एक ही शेयर, लेकिन उस एक शेयर में 50 स्टॉक्स का प्रोपोर्शन है, डिफरेंट प्रोपोर्शन है। तो ये फर्स्ट ETF निफ्टी 20 लॉन्च हुआ था, जिसको लॉन्च किया था बेंचमार्क म्यूचुअल फंड ने। बेंचमार्क म्यूचुअल फंड उनका नाम है, इसलिए इसका नाम ऐसे पड़ा, निफ्टी BE स्मॉल एंड E कैपिटल ES, बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। टी को उन्होंने साइलेंट रखा है, टी नहीं लिखा है बीच में। और ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं वैसे निफ्टी 20 का एक शेयर भी हम लोग परचेज कर सकते हैं, यानी एक यूनिट भी हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ गोल्ड ETF। नेक्स्ट इज सेंसेक्स प्रूडेंशियल ICICI exchange traded fund, SPICE. It is a ETF which can be bought and sold like a equity share. Index futures have a minimum lot size. अगर आप index futures खरीदते हो तो उसमें आपको lot size होगा, ठीक है। In ETF investor can buy even 1 unit of ETF. इंडेक्स फंड में, इंडेक्स में क्या होता है, आप एक यूनिट भी ले सकते हो, लेकिन निफ्टी के फ्यूचर्स अगर आप लेते हो या सेंसेक्स के फ्यूचर्स आप लेते हो तो आपको लॉट साइज तो पता है, उसमें लॉट साइज आपको मिनिमम लेनी पड़ती है। फंड ऑफ फंड्स, they collect money from public and invest into different mutual funds. They invest in private equity funds, and you will have to pay the double fees in case of fund of fund scheme. Because अगर कोटक म्यूचुअल फंड का FOF आ रहा है तो कोटक FOF will invest into other mutual funds, and they have their own charges, and those mutual funds in which they are investing, they also charge. So there are double charges paid by mutual fund investors. So this is the disadvantage of fund of fund scheme, that you are paying double. You are paying to Kotak also, and Kotak is paying to other mutual fund their commission and their transaction cost.